अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं स्पिन पाकिस्तान। गाइस, आज का रिव्यू कुछ स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम करने वाले हैं उन दो स्मार्टफोन्स के दरमियान बैटरी चार्ज टेस्ट जो कस्टमर की बेस्ट चॉइस रहे हैं इन मिड रेंज स्मार्टफोन्स। जी हां, आज का कंपैरिजन होगा Infinix Note 7 और Vivo S1 Pro के दरमियान। मैं आपको बताता चलूं कि Infinix Note 7 मिलता है 5000 mAh की बैटरी के साथ और इसकी प्राइस 29000 है, जबकि Vivo S1 Pro मिलता है 4500 mAh की बैटरी के साथ जिसकी प्राइस अब 4000 कमी के साथ 40000 दिखने को मिलती है और दोनों स्मार्टफोन्स 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बैटरी चार्ज टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाते रहें। तो चलिए आज का बैटरी चार्ज टेस्ट शुरू करते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा Infinix Note 7 ने बैटरी चार्ज टेस्ट में क्लियरली बीट किया है Vivo S1 Pro को। यहां तक कि Vivo S1 Pro की बैटरी 4500 mAh है, जो Infinix Note 7 की बैटरी से भी 500 mAh छोटी है। उसके बावजूद Note 7 ने बैटरी चार्ज टेस्ट में विन किया है। तो दोस्तों अगर आपने बैटरी परफॉर्मेंस वाइज इनमें से कोई स्मार्टफोन बाय करना हो तो Infinix Note 7 बेहतरीन चॉइस होने वाली है, बिकॉज इसकी 5000 mAh की बैटरी जल्द चार्ज होने के साथ साथ आपको लॉन्ग टाइम बैकअप भी देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय के साथ आगाह करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लाते रहें। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।